Now let's begin with the next part, that is what is the respiratory substrate. Now respiratory substrate, it is the substance that undergo the breakdown to give the energy. यानी ये वो सब्सटेंस है जिसका ब्रेकडाउन होकर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अभी हमने ऊपर रिएक्शन में पढ़ा, उसके रेस्पिरेशन के रिएक्शन में पढ़ा कि ग्लूकोज इट इज़ ब्रोकन डाउन टू गिव द energy. So glucose is one of the respiratory substrate. Here we can use the proteins also, okay, we can use the fats also, they can also help us to take the energy. But whenever we have to talk about the instant energy, we get the instant energy from the carbohydrates, okay, but fats as well as proteins, they also give us energy. Clear? So next comes the experiment or the activity which will justify that carbon dioxide gas is released during the respiration. अभी हमने respiration की reaction पढ़ी थी, okay, और उस respiration की reaction में हमने पढ़ा था कि carbon dioxide gas is released. So how can we justify that the gas which is released is carbon dioxide? So for this we have to perform one activity. In that activity we have to take the 2 test tubes. हमने 2 test tubes लेनी है and fill them, both of them, with the lime water. Lime water is the solution basically which is transparent in color. तो हमने दोनों 2 test tubes लेनी है. Mention one test tube as test tube A and another one as test tube B, and now add the lime water to both of the test tubes. Now what we have to do, in test tube A we will fit a pichkari, okay, and a rubber tube, and in second test tube we will take a rubber tube and blow the air directly from the mouth. Clear? So हमने यहाँ पर पिचकारी या फिर कोई भी हम इंजेक्शन की सिरिंज भी ले सकते हैं फॉर ब्लोइंग द एयर इन टेस्ट ट्यूब ए, एंड इन टेस्ट ट्यूब बी वी विल ब्लो द एयर बाय द माउथ. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज़ दैट किसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो ज़्यादा आएगा, द एयर विच वी ब्लो थ्रू द माउथ और द एयर विच इज़ ब्लोन थ्रू द पिचकारी? ओके, योर आंसर, लेट्स वॉच योर आंसर. Firstly, I would like to add over here is that whenever this lime water it react with the carbon dioxide, it will change its color from transparent to the milky color. Okay, तो ये reaction देखकर हमने justify करना है कि किस test tube में जल्दी से lime water milky में convert हुआ. So we will observe that in test tube B this reaction happens earlier as compared to the test tube A, because in test tube B respiration is releasing the carbon dioxide gas. हमारा जो बॉडी का वेस्ट होता है, वेस्ट गैसियस प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है. तो इसलिए क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा है. But if we are talking about the air, we all know the composition of air, that in air carbon dioxide is in very minute amount. Carbon dioxide is in very minute amount. So reaction to lime water converts into milky, it will occur earlier in the test tube B. Okay, so here calcium hydroxide, that is the lime water, whenever it react with the carbon dioxide, it will give rise to calcium carbonate and water, and this calcium carbonate it will form the white color precipitates. It will form the white color precipitate which make it turn milky. Okay, what is calcium hydroxide? Calcium hydroxide is lime water. But here I want to add one point, that when this calcium hydroxide it gets the high supply of carbon dioxide or large amount of supply of carbon dioxide, then this calcium hydroxide is converted into calcium bicarbonate.
ओके, एंड दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो ये ईजिली सॉल्युबलाइज हो जाता है वाटर के अंदर, डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, एंड एज अ रिजल्ट क्लियर सॉल्यूशन इज़ formed. Okay, so both these reactions, they are very very important. Both of the reactions, they are very very important. You should know that whenever lime water reacts with less amount of carbon dioxide, it will form calcium carbonate, okay, which is not soluble in water, which will form white precipitate and convert the transparent solution into the milky solution. And whenever this lime water it gets the high amount of carbon dioxide, it will form calcium bicarbonate, which is soluble in water and which will form the clear solution. So this is very important part. Okay, so now the next topic is steps for respiration. Okay, now steps for respiration includes the 3 steps: breathing, external respiration and internal respiration. All the 3 steps, they are very important. Okay, so let's take the view of the first step, that is breathing. Now what is the meaning of word breathing? Breathing का मतलब क्या होता है? Breathing means that when we take up oxygen and when we give out carbon dioxide. Okay, when we take the oxygen and we give up the carbon dioxide, the process is termed as breathing. Okay, so the process of taking in the oxygen, it is called as exhalation, and the process by which we are taking the by which we are releasing the carbon dioxide out of the body as the waste product, that process is called as exhalation. Taking up oxygen is inhalation and giving out carbon dioxide is exhalation. Okay, so these both steps, they are included in the breathing. They are included in the breathing, exhalation and inhalation. सबसे पहले inhalation होता है. Inhalation में we take up the oxygen and in exhalation we give out carbon dioxide. Okay, now come to the next one, that is the external respiration. External respiration is kind of respiration which takes place among the lung and the blood capillaries. ओके, लंग्स और कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, दैट इज़ कंसीडर्ड एज द एक्सटर्नल respiration. And internal respiration on other hand is the exchange of gases in between the blood capillaries and the different tissues of the बॉडी. जब इन दोनों के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन. सो देयर इज़ डिफरेंस इन दीज थ्री टर्म्स. ओके, what is external respiration and what is internal respiration? I hope you all are now you all have understood the part. Okay, now we move on to the next topic, that is respiration versus photosynthesis. Again, this is the important part, respiration versus photosynthesis. Now respiration we have discussed, and we have already discussed photosynthesis in our last topic, that is nutrition. So here if I want to add one point, that in respiration the complex food material is broken down into the simpler form. So that process is termed as the catabolic process. हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एक होती है एनाबॉलिक एक्टिविटी. Catabolic activities in common they are called as breaking down processes. Okay, जिसमें कोई complex चीज़ broke down होकर क्या बनाती है, कोई भी simpler चीज़ बनाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं. और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या हुआ? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी सिंपलर थिंग्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं?
anabolic process, यानी they are the synthesizing reactions, they are the synthesizing processes. तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि रेस्पिरेशन में जो फूड है वो ब्रेक होकर हमें एनर्जी दे रहा है. तो ये यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया. फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो कंबाइन होकर हमें क्या दे रहा था, फूड दे रहा था. तो वहाँ पर कोई नई चीज़ बन रही है, सिंथेसाइज हो रहा है, फूड इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ द एनाबॉलिक प्रोसेस. ओके. Now if we talk about the second point, that in respiration it takes place in all the living cells, whether they are plants, animals, and maximum of the microbes, they undergo the respiration. But if we talk about photosynthesis, it occurs only in the green cells, or mainly the green plants and the animals which are having the green pigment. Okay. Next difference is, in respiration oxygen is being consumed and carbon dioxide is being released. So there is difference between breathing and respiration. अगर आप किसी layman person से पूछोगे कि is breathing and respiration same, their answer will be yes. But here I have to mention here that breathing, it is just the part of respiration. Breathing is not the respiration, it is the part of respiration. Respiration is the broader term, जिसका एक छोटा सा हिस्सा है breathing, जिसके थ्रू हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का स्टेप ब्रीदिंग है. तो ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था कंज्यूम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, इनहेलेशन, एंड लिबरेट ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलेशन. Clear? But in the photosynthesis it is exactly opposite. In photosynthesis, plants, they take up carbon dioxide from the air and they liberate the oxygen. So the plants are therefore called as the lungs of the earth. Clear? Now we talk about the raw materials, या फिर वो मटेरियल जिसके थ्रू कुछ प्रोडक्ट बनता है. तो रेस्पिरेशन में हम रॉ मटेरियल क्या लेते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ओके. दे फॉर्म द प्रोडक्ट, लाइक what are the products that are formed in the respiration, that is carbon dioxide, okay, and water, and a large amount of energy. On the other hand, photosynthesis में हमारे पास raw material क्या होता है, that is carbon dioxide, water and sunlight. They combine to form the food. So now we come to the end products, यानी दोनों के अंदर end products क्या बनेंगे. In the respiration, the end product I have already discussed with you is carbon dioxide, water and energy. On the other hand, in photosynthesis, the end product is glucose and oxygen. Glucose means the food. Okay. Now we come to the next topic, that is the types of respiration. It is the very important part, types of respiration. Now the respiration, it is only of two types, aerobic and anaerobic. Okay. Aerobic respiration means that the respiration that occurs in the presence of oxygen. अगर हमें कॉमन सी लैंग्वेज में aerobic respiration को डिफाइन करना है, तो it is the respiration which takes place in the presence of oxygen. And anaerobic respiration means the respiration that occurs in the absence of oxygen. So let's begin with the aerobic respiration first. The aerobic respiration, it takes place in the two steps. One is glycolysis and second one is Krebs cycle. Okay. So it takes place in two areas of the cell. The glycolysis process, it takes place in the cytoplasm, and the Krebs cycle process, it takes place in the mitochondria. And in general we know that mitochondria is the powerhouse of the cell, as it is giving us energy. Okay. So main जो energy releasing का process है वो कहाँ होता है, mitochondria में होता है. So let's take a view कि what happens in the glycolysis and the Krebs cycle. So let's begin with the glycolysis. Glycolysis, the word is made up of two terms, the word glyco and lysis.
Lysis word is related with the breakdown. Glyco word is related with the glucose. So in glycolysis, the glucose is broken down into the pyruvic acid. In glycolysis, glucose will be broken down into the pyruvic acid. And this pyruvic acid, it is 3 molecule, it is 3 carbon molecule, okay. And this reaction, glucose which is converted into pyruvic acid, or it is 10-step reaction, it takes place in साइटोप्लाज्म, ओके। आपके सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं है, तो जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आपको मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया the second step of aerobic respiration takes place, that is the Krebs cycle. Now this pyruvic acid, which was the result of the glycolysis, it will undergo the breakdown. It will undergo the breakdown to release one NADH2 and one FADH2, ATP, okay, and carbon dioxide, okay. Here pyruvic acid is broken down into 4 NADH2, 1 FADH2, ATP and 3 carbon dioxide. बिकॉज ये 3 कार्बन मोलिक्यूल था, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी? 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी। और ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, ओके। और एक पायरुविक एसिड में जो एक NADH2 बना है वो 3 ATP रिलीज़ कर सकता है। ध्यान से सुनिए, एक पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन, 2 पायरुविक एसिड बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें से 1 के ब्रेकडाउन से 4 NADH2 बना, 1 FADH2 बना, ATP बना और 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हम बात कर रहे हैं इन 4 NADH2 में से अगर एक NADH2 की बात करें तो एक NADH2 हमें 3 ATPs देता है और 1 FADH2 हमें 2 ATPs देता है। तो यहाँ पर 4 NADH बने, ओके। तो 4 × 3 12, और मैंने यहाँ पर बताया कि 2 पायरुविक एसिड्स बने हैं, तो वी हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 2, द आंसर इज 24। टोटल कितने ATP बने NADH2 से? दैट इज़ 24 ATP। नाउ इन द सेम वे, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना था? FADH2। एक FADH2 2 ATP दे रहा है, ओके। तो 2 पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो टोटल हमारे पास कितने ATP आए FADH2 से? 4। क्लियर? अब ATP कितने प्रोड्यूस हुए यहाँ पर? एक ATP प्रोड्यूस हुआ, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने ATP बने? 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 ATP। तो टोटल हमारे पास कितने ATP हो गए? 30 ATP हमें मिले क्रेब्स साइकिल से, ओके। अब अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 NADH2 बने। 2 NADH2 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 दैट इज़ 4 × 2 दैट इज़ 8। हमारे पास टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने? 8 ATP बने। तो अगर हम टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 38 ATP बनते हैं, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कैसे 38 ATP बनेंगे। ये डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको इलैबोरेट करने के लिए मैंने बताया। जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनेंगे? 38 ATP बनेंगे इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, okay. So that was about the aerobic respiration. Aerobic respiration means it occurs in the presence of oxygen, okay. It takes place in 2 sites of the cell. One step is, that is glycolysis, it occurs in cytoplasm. Second one is Krebs cycle, which will take place in mitochondria. So both of these, they are very important parts, and दोनों को मिलाकर जो एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है? 38 ATP बन रही है, ओके। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द anaerobic respiration. The next part is anaerobic respiration. Anaerobic, it means it is opposite of aerobic. Here it occurs in the presence of oxygen. It takes place in the absence of oxygen,
Okay, so first type of living organism where the anaerobic respiration takes place is yeast. Okay, second site where the anaerobic respiration it occurs is striated muscles. आपने 9th में striated muscles के बारे में पढ़ा हुआ है. striated muscles मतलब जो हमारी मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं मसल्स. तो इन दोनों के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? anaerobic respiration होती है. अदर वन इज़ fermentation. fermentation इज़ अगेन द टाइप ऑफ anaerobic respiration. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी 38 ATP जितनी एनर्जी यहाँ पर नहीं बनती. ओके, सो दे आर लेस एफिशिएंट. ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ईस्ट. इन ईस्ट पायरुविक एसिड, यहाँ तक तो साइकिल सेम रहेगी. पायरुविक एसिड सभी में बनेगा, एरोबिक में भी बनेगा, एनारोबिक में भी बनेगा. तो जो पायरुविक एसिड है वो ईस्ट में क्या होता है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इथाइल एल्कोहल. ओके, सो ईस्ट के अंदर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? इथाइल एल्कोहल. एंड दिस इज़ वन ऑफ द एनारोबिक respiration. The second kind of anaerobic respiration, it takes place in the striated muscles. आपने देखा होगा जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपके मसल्स में पेन होने लग जाता है. दैट पेन इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी ने हार्ड वर्क किया होता है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है. और आपने देखा होगा कि आप जल्दी जल्दी से सांस लेने लग जाते हो टू ओवरकम दी ऑक्सीजन लेवल. अपने ऑक्सीजन लेवल को दोबारा से गेन करने के लिए आप जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हो, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हो. बिकॉज एट दैट टाइम योर बॉडी हैज़ डन अ हार्ड वर्क and as a result the lactic acid is produced in the muscles and it get accumulated, and this lactic acid it cause fatigueness in the muscles, it cause pain in the muscles. Now this yeast where the pyruvic acid is converted into ethyl alcohol, this yeast is used in two of the industries, that is baking as well as the brewing industry. I hope you all are familiar with the word baking. baking में आपके केक्स, पेस्ट्रीज़, डोसा ये सब फूड आते हैं. तो इन सभी के बनने में जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं दैट इज़ ईस्ट. नाउ कम टू द ब्रूइंग इंडस्ट्री. ब्रूइंग इंडस्ट्री मीन्स जिसमें आपकी ड्रिंक्स बनती हैं, विस्की बनती है, ठीक है, और बियर बनती है, वोडका बनती है. वो जो इंडस्ट्री है दैट इज़ द ब्रूइंग इंडस्ट्री. तो इन दोनों इंडस्ट्री में ईस्ट इज़ बीइंग used and yeast shows the anaerobic respiration. So yeast it act on the sugar, break down the sugar into alcohol or organic acid. ठीक है, तो ईस्ट क्या करेगा? या तो शुगर को अल्कोहल में ब्रेक डाउन करेगा, हमने पढ़ा इथाइल अल्कोहल में, या फिर ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. आई होप आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुआ है. ओके, फर्मेंटेशन अब कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है. आपने सुना होगा जो मीथेन गैस है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होती है. दोज बैक्टीरियाज दे ऑल्सो अंडरगो दी फर्मेंटेशन. क्लियर? सो दैट वॉज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. आई होप आपको समझ में आया what is aerobic and what is anaerobic respiration. Now we come to the next part, that is the breakdown of the glucose by various method या फिर fate of glucose. ओके, कि आगे जाकर ग्लूकोज क्या बनाएगा. क्लियर? सो हेयर द फर्स्ट स्टेप, that is glucose in cytoplasm, it is converted into pyruvic acid. आप पायरुवेट की जगह पायरुविक एसिड भी लिख सकते हो. ओके, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द pyruvic acid plus energy. Now this pyruvic acid it undergoes three pathways.
whenever there is absence of oxygen. The pyruvate example is yeast. जहाँ भी एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. It is converted into ethanol, carbon dioxide and energy. Okay. Now, if we talk about the second part, that is the pyruvate when there is lack of oxygen, जब ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, लैक है. एग्जाम्पल इज़ मसल्स. मैंने बताया था अभी, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम हो रही है. तो एट दैट टाइम in our muscles what happen, the lactic acid it starts accumulating. Okay, lactic acid बनने लग जाता है. Clear? And due to this our muscles they start paining and a less amount of energy is produced. Okay, now next step. Next is the in the presence of oxygen it takes place in mitochondria. We all know that mitochondria is the powerhouse of the cell. तो पावर हाउस के अंदर क्या हो रहा है, पावर हाउस के अंदर एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी कैसे बनेगी, जब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, सो दिस पाथवे इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये पूरे का पूरा पाथवे आपको इसी फॉर्म में लर्न करना है, और ये डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. दैट ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो इस पूरे टॉपिक में से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू लर्न. क्लियर? सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ है, दैट व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, how can we justify that the gas that is produced during the respiration is carbon dioxide, and then the 3 steps of respiration we have discussed. We have discussed the difference between respiration and photosynthesis, and finally we have discussed about the aerobic and anaerobic respiration, and at last breakdown of glucose by the various method, which I have told you that it is the most important question which come from this topic. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है. थैंक यू.